सो इस वीक की न्यू रेसिपी ऑफ द वीक में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल 6 वैरायटी ऑफ इंडो चाइनीज अपलोड कर रहे हैं। फैंटास्टिक। कैन आई चूज मैं क्या बनाऊंगी? यस श्योर। आई वांट टू चूज एन इजी वन। तो मैं बनाऊंगी चिकन हाक्का नूडल्स और मैं बनाऊंगी एक्सोटिक वेजिटेबल इन शेजवान सॉस। सो लेट्स कुक। गो टू क्लाउड रेसिपीज, क्लिक न्यू रेसिपी टैब and here's the new recipe exotic vegetable in Szechuan sauce. Here's the description and here's the ingredient list. Let's make the tray ready. So मैं गई क्लाउड रेसिपीज में। क्लाउड रेसिपीज में मैं जाती हूँ न्यू की टैब में। न्यू टैब में आई एम गोइंग टू कुक चिकन हाक्का नूडल्स टुडे। सो लेट मी सी द इंग्रेडिएंट्स। एज पर द रेसिपी लिस्ट मेरे इंग्रेडिएंट्स रेडी है और मेरी इंग्रेडिएंट्स की ट्रे बिल्कुल रेडी है। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। In the first step, we have to add some ingredients like garlic, red chili and onions. So I'm adding onion bulbs, few red chilies and few garlics and click OK. My first step is to marinate the chicken and chicken because मेरे पास डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ था। मैंने पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके as per the instructions रेडी है। Say okay and go to the next step. My step 2 tells me to attach the saute blade and add some water as well as some salt and pepper. So I have to add 1000 grams of water. So the water is going to boil for 8 minutes. As you can see, the ingredients are perfectly chopped. After removing the chopped ingredients in a bowl, I have to attach the saute blade. After attaching the saute blade, let's add oil. 2 tablespoons of oil and click OK and let the oil heat. Now I have to add 100 grams noodles and I will press OK. So my noodles are going to boil for 6 minutes. After the oil is heat up, we have to add some tofu. I'll add marinated tofu. Click OK and let it saute. My noodles have boiled and the next step tells me to strain the noodles using the steamer basket. इसमें half tablespoon oil डाल के so that उनको mix कर देना ताकि noodles आपस में stick ना हो. Now my next step is wipe the jar. My jar is dry and dry करने के बाद अब मुझे इसमें 2 teaspoon oil डालना है and press OK. So the oil is heating for 1 minute. The tofus are perfectly sauteed. You have to remove this in a bowl and let's add the chopped ingredients. In the same jar, after removing the tofu, we have to add this chopped ingredients and click OK. Oil heat हो गया है और अब मुझे डालना है 1 beaten egg. So this is done. Let me press OK. The egg is scrambled. I have removed the scrambled egg in my bowl. I am keeping it on the side and उसके साथ ही मुझे डालना है 1.5 tablespoon oil. I press OK and the oil will heat for 1 minute now. After the chopped ingredients are sauteed, we'll add baby corn, oyster mushrooms and 1/4 teaspoon of salt and click OK. I will add the marinated chicken now. After adding the chicken, I will press OK and now the chicken will cook for 2 minutes. Now let's add pok choy and this coriander stem. अब मुझे डालना है एक स्प्रिंग अनियन का व्हाइट बल्ब स्लाइस्ड, चॉप्ड गार्लिक और उसके साथ एक स्लिट ग्रीन चिली. आई प्रेस ओके एंड इट विल सॉटे फॉर 1 मिनट नाउ. Now let's add Szechuan sauce. Let it saute for 30 seconds. सॉटिंग हो गया है एंड नाउ आई हैव टू ऐड कैरेट्स एज वेल एज मिक्स्ड बेल पेपर्स एंड प्रेस ओके. नाउ इट इज गोइंग टू सॉटे फॉर अनदर 1 मिनट. After you add the Szechuan sauce, let's add 240 ml of stock water. Now click OK and let it boil. And now it is time to add the noodles and the egg and the rest of the seasoning. Now I will add my scrambled egg, मेरी noodles, half teaspoon pepper and half से थोड़ा सा कम salt. I will press OK and my noodles will start stirring now. After the Szechuan gravy is boiled, we have to add this cornflour slurry. My noodles are sauteed. For my next step, I am going to add sauces जो मैंने पहले से ही mix करके रखी हुई हैं. And press OK. After the gravy is boiled, add tofu.
The gravy smells amazing. Now you have to remove the coriander stems we have put in that gravy. My exotic vegetable in Szechuan sauce is ready. This looks so delicious. ज्योति, मेरी चिकन हाक्का नूडल्स भी रेडी हैं. So let's eat together. Let's eat.